Hello and welcome to my tutorial. Today we will discuss binary search. Let's see the how to work binary search. Binary search initial search reason is whole array. Then look at the data value in the middle of the search reason. If found your target, then stop the binary search. Otherwise, if your target is less than middle element or data, then new search region is lower half of the data. Or if your target is greater than middle element data value, the new search region is higher half the data. And continue from step 2 if not found in first searching. So here every time we will search the middle element. If searched element greater than middle element, we will search the higher next to the middle element. Otherwise we will search the left half the array. Let us see the example. Here we have a 9 elements, index 0 to index 8. Here finding element is 37, which is present in index 2. But in binary search, one prerequisites, so array should be the sorted order. Means array आपका sorted order में होगा, या तो ascending order है या तो descending order. So we can see this array is the sorted order. Otherwise we cannot perform binary search without sorted. So this is the problem in binary search. Without sorted data we cannot apply binary. So how to calculate middle element? Calculate middle element equals to low plus high divided by 2. We can calculate middle element with the help of this formula. So low is first element, या first index, and high is the last index of the array. So 0 plus 8 divided by 2, we will get 4. So this is the middle element. Fourth index is middle element. Our finding element is 37. If finding element 37 equals to middle element, then return middle element. अगर यहाँ पर हमें middle 37 के equal है तो हम यहाँ पर middle return कर देंगे और कोई भी next steps perform नहीं करेंगे. Otherwise, if else if 37 is less than middle element, अगर आपका 37 middle element से less है, सो हम मिडल -1 करेंगे. हाई जो हमारा हाई एलिमेंट है वो उसे यहाँ लाएंगे, देन मिडल -1 करेंगे. मिडल -1 मीन्स कि इंडेक्स 3 आपका यहाँ पर उसका हाई एलिमेंट होगा. अदरवाइज इफ 37 इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट, देन लो इक्वल्स टू मिडल +1. सो दैट यहाँ पर अगर वैल्यू 37 मिडल से ग्रेटर है तो हम यहाँ पर लो की वैल्यू एक प्लस करेंगे. दैट मीन्स कि यहाँ पर आप सपोज 45 आपका मिडल एलिमेंट है और आपका सर्च एलिमेंट 50 होता, सो यहाँ पर आपको मिडल +1 मीन्स कि लोअर वैल्यू आपकी लोअर इंडेक्स आपका 5 होता. सो हियर इन दिस केस हमारी फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ये. देन because 37 is less than middle element, because middle element here 45, 37 is less than 45, so last are high value, high equals to middle -1, so middle equals to index 3. We can see here this is the last are high value and this is the first value. We will calculate middle. So low value equals to 0, high equals to index 3. So 0 plus 3 divided by 2 equals to 1. So here first element is first index is middle, so 35 is middle. We will compare again these conditions. If 37 equals to middle element, wrong, this is not equal, then no return middle. If 37 is less than middle element, then high equals to middle -1. सो इस केस में हमारे पास सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. इफ 37 इज ग्रेटर देन मिडल एलिमेंट, सो लो इक्वल्स टू मिडल +1.
तो यहाँ पर 37 आपका मिडल एलिमेंट से ग्रेटर वैल्यू है, सो दैट हम यहाँ पर मिडल प्लस 1 करेंगे। सो मिडल प्लस 1 मीन्स कि ये आपका लो वैल्यू आप यहाँ पर 37 को पॉइंट करेगी, सो दैट वी कैन सी हियर मिडिल पॉइंटिंग टू द 37 and first pointing to the or low pointing to the 37. So we will find the middle element, index 2 low plus 3 divided by 2 equals to 2. So 2 equals to middle. If 37 equals to array of middle, then return middle. Yes, 37 equals to 37. So we will get the desired element or searched element and terminate the binary search. I hope you guys understand the concept of binary search, how we can find the element with the help of binary search. Thank you so much.